नमस्कार दोस्तों. Today's lecture is about ranked and nullity of the linear transformation. Before starting the rank and nullity, we will define some definition like kernel and the image of a linear transformation. Number one, kernel of linear transformation. Or we can say null space of ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक होमोमॉर्फिज्म की तरह ही है. तो जैसे होमोमॉर्फिज्म में कर्नेल डिफाइन होता है, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कर्नेल डिफाइन होता है. और उस कर्नेल को जो हम बोलते हैं नल स्पेस. कर्नेल क्या होता है? कर्नेल द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ दैट ए मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन v to u. Then kernel is the element of v, the set of those element of v like v1 and v2 whose image is 0 of the next vector space u. It means the kernel of the linear transformation defined as NT, nullity, null space of linear transformation defined as the element, those element of v belongs to v such that t of v is equal to 0. Where 0 belongs to, the same definition like as kernel of homomorphism. Okay, now since NT is subset of V and it form a vector space, so NT is a subspace of V. So चूँकि NT the null space subspace V, so NT is called null space. ध्यान देना, मैं फिर वापस वही बात कर रहा हूँ कि जो एंटी होगा, जो नल स्पेस होगा, वो कर्नेल ही है. कर्नेल को यहाँ पर नल स्पेस से डिफाइन करते हैं. इट्स कॉल्ड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी. सो द डायमेंशन ऑफ एंटी इज कॉल्ड nullity of linear transformation. Clear? So nullity nothing else, the dimension of the null space. यानी कर्नेल का जो डायमेंशन होगी, वो डायमेंशन हम जानते हैं. डायमेंशन क्या होती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस. सो जो एंटी का जो बेसिस होगा, कर्नेल का जो बेसिस होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक एज नाउ वी डिफाइन सेकंड. इज इमेज और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सिंपल. What is the range of a function? If a linear transformation is defined from v to u, then the elements, the mapping of v1 v2 is u1 fv1 tv1 and tv2 something. Then these element is called image or rank of the linear transformation, and this is defined by RT. So RT is nothing else, simple. RT जैसे कि हमने कर्नेल में डिफाइन करते हैं, RT क्या होगा यहाँ पर? RT is equal to T of V such that V belongs to V. Simple. Again, since
RT is subset of U, एंड आगे हम प्रूव करेंगे कि RT क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस भी होगा U का. RT इज आल्सो सब स्पेस of U. So of a linear transformation T is the dimension of the range set RT. यानी RT एक सब स्पेस बनेगा. इट मीन्स इसका कोई ना कोई बेसिस जरूर होगा, बिकॉज वी नो द थ्योरम दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस. सो RT का कोई बेसिस होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ RT, इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ RT इज कॉल्ड रैंक ऑफ. And now we discuss some example on the rank of the rank and nullity of a linear transformation. Let एक linear transformation डिफाइन है r क्यूब से लेकर r स्क्वायर में. डिफाइन कैसे है कि t of x y z is 3z. सिंस r क्यूब में ऐसे तो r क्यूब में एलिमेंट x y z की फॉर्म के आएंगे और r स्क्वायर में एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म में आएंगे. नाउ वी फाइंड So first we find null space. null space की डेफिनेशन से हम जानते हैं. null space क्या है? The NT is the set of those element of R cube. It means x, y, z. Let one element of R cube such that T of x, y, z is equal to the 0 of R square, that is 0 0. It means x y z belongs to R cube such that T of x y z डिफाइन कर रखा है हमें x, y minus 3z is equal to 0, 0. It means x, y, z belongs to R cube such that x is equal to 0 and y is equal to 3z. So the null space of linear transformation T is given by x means 0, y means 3z and z means z, such that z belongs to R. क्योंकि R क्यूब और R स्क्वायर है, R क्यूब और R स्क्वायर वेक्टर स्पेस होते हैं जहाँ पर किस फील्ड पर डिफाइन होते हैं, R पर डिफाइन होते हैं. सो दिस इज द नल सेट एंड द रेंज सेट, रेंज RT डिफाइन कैसे होगा, RT is equal to T of x, y, z such that x, y, z belongs to R cube. और T of x, y, z कैसे डिफाइन कर रखे हैं पर x, y minus 3z such that x, y, z belongs to R. That is the range set of the linear transformation T.